Hello, dear students. I am Mrs. R. Anand and welcome to the English class of Standard 10th. In the last module, we have seen an epitome of courage, part 1, in which we have seen who are handicapped people. Handicaps are not those who do not have normal senses or physiology of their body. But handicaps are those who refuse to take up challenges even with all their senses and physiology in perfect condition. And one of the greatest example we have seen of courage is Dr. Stephen Hawking, who, in spite of suffering from an extremely rare disease, continued to do his research work and became one of the greatest scientists of this century. So, today we will study an epitome of courage, part 2. We often tend to hide behind our weaknesses, disabilities, handicaps, or mourn over them our whole life through. Dr. Stephen Hawking, one of the greatest scientists of this century, did not do so. In spite of suffering from a very rare and dreaded disease, ALS or Lou Gehrig's disease, Dr. Hawking continued his research undaunted. His exemplary courage should inspire to do our best even under trying circumstances. Let's continue further. How much time he had left on this planet was very uncertain. The prognosis was bad, and doctors said they could not do much. When Dr. Stephen Hawking learned that he was suffering from a very rare and dreaded disease, he continued with his research. And he did not know how much time he has got on this earth. वो कितने दिन और जिंदा इस धरती पे रहेंगे वे नहीं जानते थे. The prognosis was bad and the doctors said they could not do much for him. Prognosis means रोग का निदान या आगे उनकी कंडीशन कैसे होने वाली है was very bad and doctors were not sure that they could help him out. डॉक्टर्स का ये कहना था कि वो शायद उनकी हेल्प नहीं कर पाएंगे. Undaunted, Stephen decided to continue his research and even got engaged to Jane Wilde. Hawkins says that, ironic as it may sound, it is at this dismal age he began enjoying life the most. This, he says, was because he started living life for the moment and continued his doctoral research work with renewed vigor. Now, what happened after he got to know that he doesn't have much days left to live? What happened? He decided to continue with his research, definitely. But then he also got engaged to Jane Wilde. उन्होंने क्या किया? उन्होंने ना सिर्फ अपने रिसर्च को जारी रखा परंतु उन्होंने जेन वाइल्ड नाम की युवती से एंगेजमेंट भी कर ली. और हॉकिंस कहते हैं ये बड़ी विडंबना की बात है. पर देन एट दिस डिसमल एज, ऐसी निराशाजनक स्थिति में ही बिगैन एंजॉइंग लाइफ द मोस्ट. निराशाजनक स्थिति क्यों है? बिकॉज ही डिड नॉट नो हाउ मच टाइम ही हैज़ गॉट एंड ही वॉज सफरिंग फ्रॉम दिस डिसीज. He could never get all right after that. He could never get cured with that disease, from the disease. So still in this particular stage, he started enjoying life the most.
And why did he started enjoying life the most? Because he started living life for the मोमेंट. उन्होंने कैसे जीना शुरू किया? उस पल के लिए जीना शुरू किया, और इसीलिए उन्होंने जीवन को पूरी तरीके से एंजॉय करना शुरू किया. एंड ही कंटिन्यूड हिज डॉक्टरल रिसर्च. अपना रिसर्च वर्क उन्होंने जारी रखा. कैसे? पूरी शक्ति के साथ, पूरी ताकत के साथ, विद अ रिन्यूड विगर, एक नई शक्ति, नई ताकत के साथ. In the meantime, the disease worked its way into Stephen's body and left him disabled. He began studying the concept of black holes to get his PhD. जैसे जैसे समय बीतता गया, बीमारी भी बढ़ती चली गई, एंड बिकॉज ऑफ दैट ही बिकेम डिसेबल्ड. वो क्या बन गए? वो अपाहिज बन गए. एंड उन्होंने अपनी स्टडी को जारी रखा. कौन से? व्हाट वाज हिज सब्जेक्ट ऑफ स्टडी? ही वाज स्टडिंग ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लैक होल्स, और उसी में उन्होंने अपनी पीएचडी के लिए पढ़ाई जारी रखी. By this time, he was confined to a wheelchair and was rapidly losing control of his hands and speech. The study of black holes sparked his imagination with bright ideas. He made many epoch-making statements that shook established theories. अब जब बीमारी बढ़ती चली गई, सो ही वॉज कन्फाइंड टू अ व्हील चेयर. वॉट इज़ कन्फाइंड? टू गेट बाउंड टू दैट, सीमित हो जाना, उसी में बंध के रह जाना. वो अपने व्हील चेयर में बंध के रह गए. एंड ओनली हिज ही स्टार्टेड लूजिंग कंट्रोल ऑफ हिज हैंड्स एंड स्पीच, क्योंकि वो जो डिसीज़ था वो उनके मसल्स को, उनके नर्वस सिस्टम में वो डिसीज़ था, और उनके मसल्स को वो वीक कर रहा था, मसल कोऑर्डिनेशन को वीक कर रहा था. एंड दैट इज़ वाई ही लॉस्ट कंट्रोल ऑफ हिज हैंड्स एंड स्पीच. जस्ट इमेजिन अ पर्सन हु कैन नॉट मूव हिज हैंड एंड हु कैन नॉट स्पीक अ सिंगल वर्ड, स्टिल ही इज़ कंटिन्यूइंग हिज स्टडी. जब वो ब्लैक होल पे स्टडी कर रहे थे, इट स्पार्क्ड हिज उनका इमेजिनेशन में जैसे एक चिंगारी सी लग गई, एंड उसमें ब्राइट ब्राइट आइडियाज़ आने लगे. और इसीलिए ही मेड मैनी एपॉक मेकिंग स्टेटमेंट्स. एपॉक मेकिंग मीन्स जो युग निर्माण करता है, ऐसे उन्होंने बयान दिए, ऐसे वक्तत्व उन्होंने दिए जिससे कि सारी बातें बदल गई. एंड ये जो उनके बयान थे, इससे सारी जितने पहले थियरीज थी, दैट दोज थियरीज गॉट शेकन. वो हिल गई थियरी, जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड थियरी थी, जो ऑलरेडी मानी हुई थियरीज थी, वो उनकी नींव हिल गई. Scientists believe that the universe began with a Big Bang. To explain this concept better, Stephen invented what is known as Lie algebra. जो साइंटिस्ट थे उनका ये मानना है कि यूनिवर्स कैसे बना, हमारा ब्रह्मांड कैसे बना? बिग बैंग से, बिग बैंग थियरी से बना है. बट देन इस चीज़ को और एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने क्या इन्वेंट किया, क्या आविष्कार किया? लाई अलजेब्रा का. Though confined to a wheelchair with no control over his body, save a finger, and with a computer to help him express his thoughts. Now, though he was confined to the wheelchair से बिल्कुल बंद गए थे, सीमित थे वहीं तक के. He has lost control over his body. उनकी पूरी बॉडी का कंट्रोल जा चुका था, except for a finger. He saved one finger with which he was operating his computer, and with that computer he used to express his thoughts. वो जो सोच रहे हैं, जैसे समझ रहे हैं, जैसे फील कर रहे हैं, used to express his thoughts with the help of computer using one finger. Dr. Hawkins is an authority on profound subject of science. Numerous honorary doctorate and awards have been bestowed on him. He is a fellow of the Royal Society and a member of the US National Academy of Sciences. Dr. Hawkins is the authority of profound subjects of science. Dr. Hawkins क्या है?
ऐसे उनके पास गहन अधिकार है। किस चीज़ का अधिकार है? गहन सब्जेक्ट्स जैसे साइंस के ऊपर उनका पूरा पूरा अधिकार। दैट मीन्स ही हैज़ ऑल अथॉरिटी ओवर देम। एंड न्यूमरस ऑनररी डॉक्टरेट्स, बहुत सारे ऐसे माननीय बहुत सारे उपाधि या बहुत सारे अवार्ड्स उन पर दिए गए हैं। डॉक्टर की उपाधि, डॉक्टरेट्स मीन्स डॉक्टर की उपाधि उनको दी गई है, उनको प्रदान की गई है। एंड ही इज़ अ फेलो, वो कहाँ के मेंबर है? रॉयल सोसाइटी के। एंड ऑल्सो मेंबर ऑफ यूएस नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस। In spite of being considered Einstein's equal in intelligence, Dr. Hawking is a very humble man. A simple, down to earth man, yes, and uh, he has authored many books dealing with his awesome ideas, keeping a layman in mind. His writing is full of wit and humor. His style is so lucid that non scientists can also understand him. His book, A Brief History of Time, is one of the best selling books of our times. Now, in spite of considered Einstein, who is the greatest scientist of this world, उनके इक्वल इंटेलिजेंस के समान डॉक्टर हॉकिंस का इंटेलिजेंस समझा जाता है, उसके बावजूद भी डॉक्टर हॉकिंस इज़ अ वेरी हम्बल मैन। हम्बल मीन्स वेरी विनम्र, बहुत ही विनम्र थे। वेरी सिंपल मैन, डाउन टू अर्थ, बिल्कुल ज़मीन से जुड़े हुए, कोई घमंड नहीं, कोई उनमें ईगो नहीं। दैट काइंड ऑफ पर्सन ही इज़, he was actually, and he has authored many books, बहुत सारी बुक्स लिखी उन्होंने जिसमें उन्होंने अपनी awesome ideas को लिखा। एंड कीपिंग उन्होंने जब बुक लिखा तो ही केप्ट पीपल हु वर लेमेंस इन माइंड, जो कि साधारण या फिर कैसे जो साधारण व्यक्ति थे उनको दिमाग में रख के उन्होंने लिखा, ताकि वो भी उनकी बातों को समझ सके। उनकी राइटिंग जो होती हैं वो फुल ऑफ विट एंड ह्यूमर, उसमें विनोद होता है, उसमें हंसी होती है, उसमें मजाक होता है। एंड हिज स्टाइल ऑफ राइटिंग इज़ सो ल्यूसिड, एकदम स्पष्ट, उसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होता। दैट इवन अ नॉन साइंटिस्ट, जो साइंस से जिनका दूर दूर तक नाता नहीं, ऐसे भी लोग उस बुक को समझ पाते हैं। हिज बुक अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम is one of the best selling books of our time। हमारे समय की बेस्ट सेलिंग, सबसे ज़्यादा बिकने वाली बुक बन गई वो अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, written by Stephen Hawkins. On being asked how he feels about having the dreadful ALS, Dr. Hawkins, the quintessence of optimism and hope, says, "Not very different from the rest. I try and lead as normal a life as possible and not think about my condition or regret the things it prevents me from doing, which are not many." Somebody asked him that how he feels, उनको कैसा महसूस होता है अबाउट हैविंग द ड्रेडफुल ALS, उनको जो इतनी बड़ी बीमारी थी उसके विषय में उन्हें क्या महसूस होता है। तो डॉक्टर हॉकिंस, हु इज़ अ क्विंटेसेंस, व्हाट इज़ अ क्विंटेसेंस? इट्स उत्कृष्ट उदाहरण जिसको कहेंगे, इट्स एन एसेंस ऑफ ऑप्टिज्म। ऑप्टिमिज्म मीन्स आप ऑप्टिमिज्म का मतलब होता है आशावाद, आशावादी, एंड होप, आशा रखने वाला इंसान। तो उन्होंने आंसर किया, नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, दूसरों से बहुत अलग नहीं। वाई ही डजंट फील दैट वे? बिकॉज ही सेज, आई ट्राई एंड लीड एज नॉर्मल अ लाइफ एज पॉसिबल। मैं जैसे दूसरों की लाइफ है, जैसे नॉर्मल दूसरे जीते वैसे ही जीने की कोशिश करता हूँ। एंड नॉट थिंक अबाउट माई, मैं अपनी दुर्बलताओं पे, अपनी वीकनेस पे, अपनी डिसेबिलिटी पे ज़्यादा ध्यान या ज़्यादा सोचता नहीं हूँ, या रिग्रेट नहीं करता हूँ। रिग्रेट करना मीन्स खेद करना या खेद जताना उन चीज़ों पे जो वो नहीं कर पाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है। मैं बहुत सारी चीज़ें कर सकता हूँ, बट देन जो चीज़ें नहीं कर सकता उन पे खेद करते नहीं बैठता हूँ, डोंट फील सॉरी अबाउट इट, बट देन आई ट्राई एंड लीड एज नॉर्मल लाइफ एज पॉसिबल।
Dr. Hawking firmly believes that in the next millennium, science will discover the core secrets of the universe, its origin, its history, and maybe ever predict its ultimate demise. Dr. Hawkins believes firmly in what? He believes in that in the next millennium is a period of 1,000 years. Sahasravad. So 1,000 साल का जो समय होता है, उस समय तक के साइंस क्या डिस्कवर कर लेगा? कोर सीक्रेट्स, जो मूल सीक्रेट्स हैं यूनिवर्स के, ब्रह्मांड के, वो उसका ओरिजिन कहाँ से आया, उसकी हिस्ट्री, एंड मे बी प्रेडिक्ट इट्स अल्टीमेट डिवाइस। और शायद हो सकता है वो क्या करे, भविष्यवाणी भी कर दे कि ये मेरी यूनिवर्स कब ख़त्म या कब नाश हो जाएगा। Like Dr. Hawking, there are many people who display exemplary courage in their lives. Let us salute all those brave people who, in spite of being disabled, strive to do their best. लाइक डॉक्टर हॉकिंस, उनके जैसे और भी बहुत सारे ऐसे लोग पाए जाते हैं, दोज हु डिस्प्ले, जो क्या दिखाते हैं अपने जीवन के द्वारा, एग्जेम्पलरी करेज। एग्जेम्पलरी करेज मीन्स अनुकरणीय या उदाहरणात्मक साहस अपने अपने जीवन के द्वारा वो दिखाते हैं। सो व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू रिस्पेक्ट देम, वी नीड टू सल्यूट दीज ब्रेव पीपल। ऐसे साहसी लोगों को हम सलाम करें जिन्होंने अपनी अपाहिज होने को लेकर रोते नहीं बैठे, लेकिन उन्होंने मेहनत करी, उन्होंने वर्क हार्ड किया, एंड दे एक्सेप्टेड चैलेंजेस इन देयर लाइफ एंड दे डिड देयर बेस्ट। उन्होंने अपना बेस्ट दिया सोसाइटी के लिए, लोगों के लिए, और अपने जीवन को एक एग्जाम्पल बना के दूसरों के सामने रखा है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेसन चिल्ड्रन. We have come, I hope you have understood all the second module of this lesson. We have come across many new words and their meanings. Let's go through them very quickly. Undaunted means not afraid of misfortune. Not afraid of misfortune. Okay. Then next, निडर जिसको बोला जाएगा. Epoch making, of great importance at a particular restricted time. इसको हिंदी में कहेंगे तो युग निर्माण करने वाला. Bestowed on, granted as an honor. Granted as an honor, प्रदान करना. Layman, an ordinary person without any skill or knowledge, साधारण व्यक्ति. Quintessence, a perfect example, उत्कृष्ट उदाहरण. Optimism, state of having positive belief, आशावाद. Regret, disappointment over an occurrence or something that one has done or failed to do so. So इसका मतलब होता है खेद होना. Children, I am posting an assignment as well. Please go through it. The first question of the assignment is guess the meanings of. First word is profound. Second is awesome ideas. Third is confined. Fourth is dreadful. And fifth is demise. Question number 2 is answer the following questions. First one is, what did Stephen Hawking study about to get his PhD? Second, what did he invent to explain the Big Bang? Third, what does the writer say about the books authored by Dr. Hawking? And fourth, what is the name of his book, which is one of the best-selling books of our time? So children, hope you have understood this lesson, Unit 2.4, an epitome of courage. Read the lesson once again, learn the new words and their meanings, and write the assignment in your register and study. Thank you, children. God bless you.